Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री सीबीसीएस फिजिक्स ऑनर्स जीई और एमएससी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगे ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ये ऑल सेट करदेव तापर वीडियोज क्लारिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन रे क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ए विषय रे पढ़िबा सो ऑलरेडी तुम्हें जानी सारी जे हाउ टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल आ थरे मने पकई दउची तीनटा क्वार्टाइल थाए Q1 Q2 Q3 फ्रॉम व्हिच Q2 इज नथिंग बट द मीडियन Q1 टा तमरो 25% रे आसे Q3 टा 75% रे ताले एटी ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन व्हिच इज बेस्ड अपॉन द अपर क्वार्टाइल दैट इज Q3 और लोअर क्वार्टाइल Q1 तो आम या इंटर क्वार्टाइल रेंज कहि परिबा व्हिच इज Q3 माइनस Q1 ओके ताले क्वार्टाइल डेविएशन आमे कोन पाइबा इंटर क्वार्टाइल रेंज को जदि आमे 2 रे डिवाइड करूछु ओके व्हिच इज आल्सो नोन एज द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज so that Q3 minus Q1 by 2 becomes the quartile deviation and thereby the coefficient of quartile deviation is defined as Q3 minus Q1 by 2 divided by Q3 plus Q1 by 2 so that it will be Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1 okay so quartile deviation जेमती मु कहली Q2 तो ऑलरेडी होची तमरो मीडियन सो मीडियन सहित एटा केमती रिलेटेड जदि हमें देखिबा ताले Q3 माइनस मीडियन इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 so that median रो वैल्यू आसिला Q1 plus Q3 by 2 ओके आ मन रखो एटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पाई राइट दिस इज ओनली फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपकमिंग चैप्टर रे हमें पढ़िबा कोन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सो ए मीडियन एक्चुअली तमरो हाफ वे रे रहिता है जेमते कहले एटा होची Q2 so that quartile deviation plus Q1 becomes median and Q3 minus quartile deviation becomes also equal to median okay so आमे देखिला distribution जेतोले 25% observation नउचु which is lying below Q1 similarly 50% पाई तमरो जो रोची Q2 आउ 50% observation lie between Q1 and Q3 ओके आ Q3 जेतोले आसी जाउची ताले 75% आडकु जाउची ओके सो हेटा हमें देखिला क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन various merits and demerits of this is also given in the book like as against the range which was based on the two observation range पाई जेमते हमें extreme दुईटा observation देखुतिला maximum और minimum quartile deviation makes use of at least 50% of the data and as such is obviously better than that of your range okay and it ignores however 25% data from the beginning and also 25% data from the top end okay so it is not affected at all by the extreme observation okay it has some merits jauchi quartile deviation can be computed from frequency distribution thile madhya hame quartile deviation bahar kari pariba with open end classes okay but demerits la quartile deviation is not based upon all observations since it ignores 25% of the data at the lower and at the upper of your distribution and it is affected considerably by fluctuation of sampling and also not suitable for further mathematical treatment okay now moving further let us see what is the percentile range already तमे percentile विषय रे जानि छ percentile range कहले सपोज जदी हला pi होची ith percentile pj हला jth percentile ताले ij percentile range को हमें कहि परिबा pj minus pi such that I is less than j so generally
एठी आमे सेमी परसेंटाइल रेंज जदि आसुछु ताले पी जे माइनस पी आई बाय 2 करबा को पड़िबो ओके सो कॉमनली जो परसेंटाइल रेंज यूज होता है सेतिरे आमे आई वैल्यू को नो 10 जे वैल्यू को 90 सो दैट एठी परसेंटाइल टा हिजबो रेंज टा P90 माइनस P10 आउ सेमी परसेंटाइल रेंज हेगला बाय 2 जदि आमे कर दोछु ओके सो मूविंग फर्दर कोएफिशिएंट ऑफ द परसेंटाइल रेंज सिमिलरली कोएफिशिएंट कले बाय 2 करके देखो तळे ऊपर आसी गला ओके जेमति आमे ऊपर देखुतला सो this becomes equal to P90 minus P10 divided by P90 plus P10 okay so एठी 80% data को से cover करूची right okay now let us solve some of the problems एठी question कहूची जे find the inter-quartile range quartile deviation coefficient of quartile deviation एठी हमको class interval देला और respective frequency दे देला ताले आमे first हला याकू table data रे रिप्रेजेंट करिबा समेशन f व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल n बाहर करिबा तापरे लेस देन करिकी cf that is your cumulative frequency बाहर करिबा okay after getting this then we calculate n by 4 because हमको क्वार्टाइल बाहर करिबार अछि फर्स्ट क्वार्टाइल पय n by 4 से आउ तमरो थर्ड क्वार्टाइल पय 3n by 4 so n by 4 37.5 आसिला okay already you know the calculation of the quartile so q1 रो वैल्यू देखो एठी आसीगला 31.75 similarly q3 by 3n by 4 as I said q3 रो वैल्यू आसीगला 62.625 okay so जदि एटा तमरो मने पड़नी you can check the previous lecture how to calculate the quartiles so quartile q1 और q2 पाई सारला परे let us now see what is the interquartile range that is q3 minus q1 this much quartile deviation by 2 कर देले एतिकी आउ रोजी coefficient of quartile deviation this much which is q3 minus q1 by q3 plus q2 which is 0.33 okay moving further evaluate an appropriate measure of dispersion for the following data एठी हमको इनकम दउची और नंबर ऑफ पर्सन्स दे देला ओके इनकम को लेस देन 50 50 to 70 so on up to above 150 दउची और नंबर ऑफ पर्सन्स दे दीची आउ comment on the following if the coefficient of quartile deviation is 0.6 and quartile deviation 15 then q1 और q3 हिजबो 40 एटा प्रूव करो कहूची ओके आमे अब फर्स्ट पार्ट को देखिबा जहां हमको डाटा देछि अगेन याकू टेबुलर डाटा रे हमें शो कर देला number of persons which is nothing but the frequency then the cumulative frequency less than cf okay so एठी n पागला हमें 1000 then n by 4 पाउचु 253 n by 4 हला 750 then we can easily calculate q1 and q2 by using our formula okay q1 एठी आसीबो 83.714 then q3 एठी आसीबो 123.565 ताले quartile deviation which is q3 minus q1 by 2 becomes equal to 19.925 तापरे एबे सेकंड पार्ट को जिबा quartile deviation रो तो फार्मूला हमें जानि छु which is given here to be equal to 15 तापरे एई फार्मूला रो हमें पाउछु जे q3 minus q1 हि जबो केते 30 ताले कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन रो जो वैल्यू देछि 0.6 सेतुर हमें q3 plus q1 पाइगला which is equal to 50 तबे एई जो दुईटा इक्वेशन 1 और 2 पाइला ताको ऐड करिबा और सब्ट्रैक्ट करिबा so that we can get the value of q3 and q1 which is 40 and 10 hence it has proved the statement to be true okay so this is all about the measure of dispersion जो थे कि आज हमें क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज ए विषय रे पढ़िला Thank you.